Yeah. So, in today's session, I would be discussing my focal point is on discussing the difficult topics, right? Which are important also, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा trigger करते हैं, and the students are not able to differentiate between those concepts, right? मेरा आज का जो मोटिव है वो यही है इस सेशन को कंडक्ट करने का कि जो तुम लोगों को टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं, राइट, जैसे डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, राइट, इन सारे टॉपिक्स पे मेरे को एम्फसाइज करना है, ठीक है? एंड इट्स लाइक अ वन शॉट लेक्चर, एंड आई वोंट बी कवरिंग यू नो पूरा business studies. My focal point is on the difficult topics and the important topics. And जो मैंने important topics की list दी थी उसमें से मैंने कुछ difficult topics pick up किए हैं for today's session. So सबसे पहले I'll be discussing about chapter number 2, principles of management, right? So before I proceed with the further topic, जो भी मैं आपसे ये file discuss कर रही हूँ, I'll share it with you once the session gets over, so that ये आप अपनी reference के लिए रख सकते हैं, and you can drop in your questions in the chat box itself. कोई भी problem है, कोई भी doubt है किसी चीज में, I am here to address. तो सबसे पहले we will be discussing about then how you can actually differentiate between the harmony not discord and cooperation not individualism. इन दोनों प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में हमने कैसे डिफरेंशिएशन करना है. See, when we talk about harmony not discord, harmony not discord says that there are two groups of people in an organization, and that is workers and management, and there is always a class conflict between both the workers and the management. ठीक है, मैनेजमेंट को लगता है वर्कर्स की जरूरत नहीं है, and workers को लगता है they are overburdened and underpaid. So Taylor ने एक concept introduce किया था which is also known as mental revolution, so that the workers and the management both should change these scenarios, the attitude towards each other, right? And एक चीज मैं और बता देती हूँ, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में टेलर एम्फसिस करता है कि अगर आपके पास कुछ गेन्स हैं, कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं कंपनी में, वो जो प्रॉफिट्स हैं, वो जो गेन्स हैं, वो वर्कर्स के साथ शेयर करो बाय द वे ऑफ बोनस, राइट? So harmony not discord says that factory system of production implied that managers served as a link between the owners and the workers. So basically here they are trying to say जो manager है वो link. So here they are trying to say जो manager है, ठीक है, manager एक link है किसके बीच में, दो parties के बीच में, that is the owner and the workers. Further it says that since as managers they have the mandate to get the work done from the workers, it should not be difficult for you to appreciate that there always existed the possibility of a kind of a class conflict between the workers and the management, right? And the managers versus workers. Taylor recognized that this conflict helped none, the workers, the managers, or the factory owners. He emphasized that there should be complete harmony between the management and the workers. Both should realize that each one is important. दोनों को realize करना चाहिए कि वो एक दूसरे के लिए क्या है, important है. To achieve this state, Taylor called for complete mental revolution on part of both the management and the workers. It means that management and workers should transform their thinking process towards each other. In such a situation, even trade unions will not think of going on strikes, etc.
राइट. एंड व्हाट आर ट्रेड यूनियंस? जब वर्कर्स अपनी एक यूनियन सी फॉर्मुलेट कर लेते हैं. अब ये वाला पैराग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है, मैनेजमेंट से लेके कंपनी तक. दिस पैराग्राफ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये पैराग्राफ क्या कहता है कि मैनेजमेंट शुड share the gains of the company if any with the workers. अगर मैनेजमेंट को कुछ गेन्स हुए हैं, कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं, वो गेन्स हमने किसके साथ शेयर करने चाहिए? वर्कर्स के साथ, बाय द वे ऑफ बोनस फॉर एग्जांपल. if any with the workers, at the same time workers should work hard and be willing to embrace the change for the good of the company. ये लाइन आपकी यूज हो सकती है जब केस स्टडी फॉर्मुलेट हुए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से. both should be part of the family. According to Taylor, scientific management has its foundation the firm conviction that the true interest of the two are one and the same. right? मतलब एम्प्लॉयर की प्रोस्पेरिटी किस पे डिपेंडेंट है? एम्प्लॉय पे. और एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी किस पे डिपेंडेंट है? एम्प्लॉयर पे. are the one and the same, that the prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by the prosperity for the employees and vice versa. So now we will be discussing case study 1, and this case study came in board 2013. ये मेरे एग्जाम में आई थी, right? So सबसे पहले जब भी आपको केस स्टडी आएगी, आप उसका सब पार्ट पहले पढ़ोगे, right? So the sub part is identify and explain the principles. अगर कभी भी principles लिखा है, so that means कितने principles हुए? वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं. Identify and explain the principles of fuel and Taylor referred in the above paragraph. So it says that principles of Taylor and fuel are mutually complementary. One believed that the management should share the gains of the company with the worker. एक बंदा ये बिलीव कर रहा है कि मैनेजमेंट को अगर गेन्स हुए हैं तो वो गेन्स हमने किसके साथ शेयर करने हैं? वर्कर्स के साथ, राइट? और यहाँ पे भी ऊपर भी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने यही पढ़ा था, मैनेजमेंट शुड शेयर the gains of the company if any with the workers. तो अगर मैं इस स्टेटमेंट पे देखूं, आप मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओ, इस लाइन में एक बंदे ने बिलीव किया कि मैनेजमेंट को जितने भी जो गेन्स हैं वो हमें किसके साथ शेयर करने चाहिए? वर्कर्स के साथ. तो इस स्टेटमेंट में आपका कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? You can drop in your answers. Lavya, it's wrong. मैंने जो स्टेटमेंट मार्क की है, one believe that management should share the gains of the company if they are any with the workers. ये टेलर का प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. आगे वो ये कह रहा है, while the others suggested that employee compensation should be paid within the paying capacity of the firm and it should be adequate to fulfill the basic amenities of life. दूसरा बंदा ये कह रहा है कि जो आप सैलरी वेजेस एम्प्लॉइज को दे रहे हो वो फेयर होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे. सो इसका वाज फ्यूल का रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज. दैट्स इट, राइट? सो ये जो केस स्टडी थी ये 3 नंबर की आई थी, राइट? एंड इसमें हमें टेलर का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और फ्यूल का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना था, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज. Right. Next, we will be talking about cooperation, not individualism. Cooperation, not individualism. किस प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है कि कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद
कोऑपरेशन। मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए जो वर्कर्स क्या दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। रादर देन मैनेजमेंट को वर्कर्स की सजेशंस को क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए और उन सजेशंस को रिवॉर्ड करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे आपका कॉस्ट, आपका टाइम, आपका एफर्ट reduce so, right? So it says that there should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. This principle is an extension of the principle of harmony, not discord. Competition should be replaced by cooperation. Both should realize that they need each other. For this, management should not close its ears to any constructive suggestions made by the employees. They should be rewarded for their suggestions, which results in substantial reduction in cost. अब इनिशिएटिव में भी यही था, हमें एम्प्लॉइज की सजेशंस को क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और उन सजेशंस को रिवॉर्ड करना चाहिए, जिससे आपका कॉस्ट कम हो, आपका टाइम कम लगे, आपका एफर्ट कम लगे। अगर क्वेश्चन ये आ जाए बोर्ड में कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कौन से प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल पे बेस्ड है, सो दैट इज इनिशिएटिव, राइट? They should be part of the management, and if any important decisions are taken, workers should be taken into confidence. ये वाला पैराग्राफ is very very important for board, ठीक है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के लिए जो मैंने पैरा मार्क किया है, उससे अक्सर केस स्टडी आती है। तो टेलर का क्या मानना था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों पार्टीज में ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड दे शुड वर्क साइड बाय साइड, encouraging their ways out. According to Taylor, there should be almost equal division of work and responsibility between the workers and the management. All day long, the management should work almost side by side with the workers, helping, encouraging, and smoothing the way for them. So this was the differentiation between the two scientific principles, that is harmony, not discord, and cooperation, not individualism. Now we will be discussing about the comparison between the fuel and the Taylor's principles of management, right? So जब भी डिफरेंस आएगा, आपने डिफरेंस को किस फॉर्म में लिखना है, टैबुलर फॉर्म में लिखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, बेसिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप किसी दो कंसेप्ट्स के बीच में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, राइट? सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, पर्सपेक्टिव। हेनरी फ्यूल किस पे फोकस करता था, ऑन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर का फोकल पॉइंट वाज कि हमने वर्कर्स की एफिशिएंसी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, और वर्कर्स को हम क्या बोलेंगे, शॉप फ्लोर, राइट? Second, unity of command. What does unity of command state? Unity of command ये कहता है कि एक सबॉर्डिनेट एक ही बॉस से क्या करेगा, ऑर्डर रिसीव करेगा। अगर वो दो बॉसेस से ऑर्डर रिसीव करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी ऑर्डर्स को पहले एग्जीक्यूट करूं। सो हेनरी फ्यूल वाज अ स्ट्रिक्ट बिलीवर, staunch proponent is a French word which means Henry Fuel was a strict believer कि एक बंदा एक ही बॉस से क्या करेगा, ऑर्डर रिसीव करेगा। बट जो टेलर था he was not a strict follower of unity of command because guys, I'll be taking all your doubts in last 30 to 40 minutes, right? You can ask your doubts at that point of time. So unity of command, Taylor did not believe in unity of command because under functional foremanship he hired 8 people. 4 को उसने प्लानिंग में डाला, 4 को उसने प्रोडक्शन में डाला, और वो 8 की 8 स्पेशलिस्ट फोरमैन ऑर्डर्स देते थे वर्कर्स को।
did not feel that it is important, as under functional foremanship, a worker received orders from the 8 specialists. Applicability, Henry Fayol के principles are universally applicable, and F.W. Taylor के जो principles हैं, they are applicable to some specialized situations. Focal point, Henry Fayol का focal point was in improving the overall administration, and F.W. Taylor का focal point was increasing productivity. Personality, Henry Fayol was a practitioner and F.W. Taylor was a scientist. Expression, Henry Fayol was called as father of general management and thought, and Taylor was called as father of scientific management and thought. This is, I'm telling you, generally expression. Henry Fayol was general theory of administration, and F.W. Taylor is well known for the scientific management. Now we move to chapter number 3, that is business environment. Okay, how you will differentiate dynamic nature and uncertainty when you are solving a case study. Anybody who can tell me in the chat box how you can differentiate between the two concepts? There is a very thin line to differentiate between the two concepts. Anybody who knows this thing very well? See, when we talk about dynamic in nature, we say that हमारा जो environment है वो change हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, मार्केट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं डायनामिक नेचर पे बेस्ड है. अनसर्टेनिटी सेज दैट इट इज वेरी difficult to predict the changes in the business environment, as the environment is changing too frequently, as in case of IT sector, as in case of fashion industries. अगर मैं केस स्टडी में ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस फैशन पे, आईटी पे कर रही हूँ, सो द क्वेश्चन इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अनसर्टेनिटी. ठीक है. एंड डायनामिक इन नेचर में सिंपल ये है कि अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, दैट इज डायनामिक इन नेचर, राइट? ओके, अब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स. किन किन बच्चों को टाइप्स ऑफ प्लान्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है? यू कैन रेज योर हैंड्स. Okay, this is a common doubt for each and every student of class 12. So I will tell you one thing, there are two types of plans. मैंने वो categories यहाँ पे नहीं लिखी हैं. That is the single use plans and that is the standing plan. And single use plan वो plan होता है which is developed for one time event or a project. जब वो project खत्म होगा, okay fine, your plan is finished. And when we talk about standing plan वो plan होता है जो बनाया एक बार जाता है, बट टाइम टू टाइम आपको उसमें क्या लानी पड़ती है? मॉडिफिकेशंस लानी पड़ती हैं, चेंजेस लाने पड़ते हैं. तो सबसे पहले we will be talking about objectives. What are objectives? Objectives is the first step in the planning process. Planning process में हम पढ़ते हैं ना, सबसे पहला मतलब एक पॉइंट स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करोगे. एंड ऑब्जेक्टिव एक्चुअली टेल्स यू वेयर डू यू वांट टू रीच, right? It is the desired future position जहां पे आप पहुंचना चाहते हो. They are the end points and they are mainly framed by the top level management, and objectives have to be expressed in the quantitative and specific terms, right? For example, my objective is to get 90% in my masters. That is an objective. Your objective could be to achieve 98% in class 12 or to get into some good university, good college. That is an objective, right?
So it states that the first step in the planning process is setting objectives. Second, objectives therefore can be said to be the desired future position that the management would like to reach, right? Further, objectives are very basic to the organization and they are defined as ends which the management seeks to achieve by its operations. Therefore, an objective simply stated is what you would like to achieve, that is the end result of activities. For example, an organization may have an objective of increasing the sales by 10% or earning a reasonable rate of return on investment or on 20% profit from the business. They represent the end points of planning. All other managerial activities are also directed towards achieving these objectives. जितनी भी organization में activities होंगी, they would be directed towards the achievement of the organizational goals. And objectives को usually कौन set up करता है? Top level management, right? They are usually set up by the top level management of the organization and they focus on the broad and the general issues of the company. They define the future state of affairs which the organization strives to realize. They serve as a guide. They serve as a guide for the overall business planning. Different departments or units in the organization may have their own objectives, right? लोगों के different departments or units in the organization may have their own objectives. देखो, एक तो company का main objective होगा, उसके बाद जो different departments होंगे organization में, units होंगे, उनके खुद के छोटे छोटे खुद कुछ objectives, कुछ daily targets हो सकते हैं. Objectives need to be expressed in specific terms, that is they should be measurable in quantitative terms in the form of a written statement of desired results to be achieved within a given period of time. Okay, I have a question for you. ये जो हम objectives की बात कर रहे हैं, right? Objectives single use plans में आएंगे कि standing plans में आएंगे कि ये ना तो single use plan है ना तो ये standing plan है. My question is, ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज प्लान है कि स्टैंडिंग प्लान है कि ना तो ये सिंगल यूज है ना तो ये स्टैंडिंग है. See, when we talk about objectives are neither considered as single use plans or standing plans. ना तो आप ऑब्जेक्टिव एक बार बनाओगे, ना वो सेम ऑब्जेक्टिव बार बार ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू होगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन. जैसे हम स्टैंडिंग प्लान्स में बोलते हैं ना, वो बन तो एक बार जाते हैं बट उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन चाहिए. सो ऑब्जेक्टिव्स आर नीदर कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूज प्लान और अ स्टैंडिंग प्लान. Right. So what do you understand by the term strategy? See, strategy is a comprehensive plan, right? It's a detailed plan. And whenever a company prepares a strategy, वो अपने दिमाग में ये रखती है कि business environment में क्या changes चल रहे हैं. And a strategy is always prepared to beat the competitors. जैसे आप marketing strategies बनाते हो, growth strategies बनाते हो, right? The term strategy may be defined as a set of comprehensive plan, initiative, and responses to ensure achievement of organizational objectives. A strategy provides the broad contours of an organization's business. It will also refer to future decisions defining the organization's direction and scope in the long run. स्ट्रैटेजी की 3 डायमेंशंस होती हैं और इसको आप स्टेप्स भी बोल सकते हैं. पहला, determining the long-term objectives. Second, adopting a particular course of action. And तीसरा, allocating necessary resources to achieve the objectives. Strategy has 3 dimensions or you have to follow 3 steps. पहला, you have to determine the long-term objectives. Dusra, you need to adopt a particular course of action. And teesra, you have to allocate
few necessary resources so that वो आप given target accomplish कर लोगे. और जब भी आप एक strategy बनाओगे, you will keep in mind the changes which are taking place in the business environment, right? So strategy is also considered कि ना तो वो single use plan है, ना तो वो standing plan है. तो दो ऐसे plans हैं जो ना तो single use plans की उसमें consider होते हैं, ना तो standing में. So that is objectives and strategies. Next we have policies. What are policies? Policies are general statements. Policies हमारी क्या है? These are the general statements, right? And policies are generally made so that there is smooth working of an organization. They provide the broad parameters, right, within which आप अपनी activities को क्या करते हो? Perform करते हो. And policies can be designed for insiders and outsiders, and policies can be minor or major. But my emphasis point is कि policies क्या हैं? General statements हैं, and they provide a broad framework. एक वो framework provide कर देते हैं within which every person has to perform his or her activities, right? Policies are general statements that guide thinking and action of managers in decision making. They define the broad parameters within which a manager may function. During the course of their functioning in the organization, managers have to make decisions, solve problems, guide people, and take action on a wide front of activities and issues. It is in the best interest of the organization that such activities and issues are handled within the broad policy framework of policies. Policies do not provide ready-made decisions, nor do they specify how managers have to make decisions and implement them. And policies are of two types, that is minor and major. Okay, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जैसे मेरे स्कूल की पॉलिसी है कि आई गिव एडमिशन टू दोस पीपल हु सिक्योर 85 to 90 मार्क्स, दैट इज स्कूल की एडमिशन पॉलिसी, राइट? मैकडॉनल्ड्स की पॉलिसी ये है कि हम अपनी फ्रेंचाइजी किसी और बंदे को नहीं देते हैं, राइट? मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि मैं गुड्स को उधारी पे नहीं बेचूंगी, वो पॉलिसी है. मेरी कंपनी की पॉलिसी है दैट आई विल ओनली डील विद द होलसेलर्स, आई विल नॉट डील विद द रिटेलर्स, दैट इज द पॉलिसी. एंड पॉलिसी एक स्टैंडिंग प्लान है. Then we have procedures. What are procedures? Procedures are step-by-step way of doing an activity, right? Steps हैं, जिन स्टेप्स को आपको क्रोनोलॉजिकल मैनर में फॉलो करना ही करना पड़ेगा. प्रोसीजर्स आर स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग जॉब और एन एक्टिविटी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्कूल की एडमिशन पॉलिसी है कि जिन बच्चों के 85 to 90% मार्क्स आते हैं हम तो उनको ही एडमिशन देंगे. सो बेटा उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. यू विल गो टू दैट स्कूल, आप स्कूल का कुछ प्रोस्पेक्टस एडमिशन फॉर्म लोगे, आप एडमिशन फॉर्म को फिल करोगे, उसके बाद स्कूल वाले कहते हैं जी एक रिटन टेस्ट है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू है, फिर बच्चे को हम एडमिशन देंगे. तो ये क्या हुआ? प्रोसीजर हुआ. और आपके स्कूल की पॉलिसी क्या थी कि जिन बच्चों के 80 to 85 मार्क्स आएंगे, सॉरी 85 to 90% के मार्क्स आएंगे, उनको हम एडमिशन देंगे. तो जो प्रोसीजर्स होते हैं, दे आर the steps which have to be followed within the broad policy framework. Policies और procedures ऐसे दो तरीके के plans हैं जो कि interlinked और interdependent है. Procedures are step-by-step way of doing the job. They are the routine steps on how to carry out the activities, and they are always specified in a chronological manner. Policies and procedures are interlinked to each other, and procedure are the steps which are to be performed within the broad policy framework. Procedures ऐसे कुछ steps हैं which have to be followed within the broad policy framework of the company, and procedures are also standing plans.
Then we will talk about method. What is a method? Method is a way of performing a task. और आप वो method choose करोगे जिसकी cost क्या होगी, कम, और जिससे आपको क्या मिलेंगे, maximum benefits मिलेंगे, right? And so when you place an online order, there are few steps which you have to follow, right? पहला step होता है कि आप items को cart में डालते हो, right? And जब आपने finally items को select कर लिया, then you will select the delivery address कि delivery address क्या है. फिर third होता है you have to make the payment. अब payment के लिए आपके पास different options होते हैं, whether you have to pay through the debit card, credit card, UPI और Amazon बैलेंस जो आपके पास होता है, और COD. सो वो मेथड है. मेथड आपको बेसिकली ये बताता है कि आपने एक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है. सी, आइटम्स को सिलेक्ट करना, कार्ट में डालना, डिलीवरी एड्रेस डिसाइड करना, वो ये सारे स्टेप्स हो गए, प्रोसीजर्स हो गए. But when you are making the final payment and you are deciding how you have to make that payment, that is a method. Method basically ये बताता है कि एक स्टेप प्रोसीजर का कैसे परफॉर्म किया जाएगा. Methods are the prescribed ways or manner in which a task has to be performed. They are the standardized ways of performing jobs of a repetitive and routine nature. The method may vary from task to task. Selection of a proper method saves time, money, resources, and efforts. It deals with the task comprising one step of a procedure and specifies how this step is to be performed. The method may vary from task to task. And method is also a standing plan, right? So policies, procedures, methods are standing plans. Now we will be talking about rules, and rules are also standing plans. So can anyone give me an example of a rule? What do you understand by the term rules? See, rules are specific statements. जब हम पॉलिसीज के बारे में बात करते थे, पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स. विराज, अनन्या, पूर्वा, you are giving correct answers. Policies are general statements. Rules are specific statements. Rules tells you कि what is to be done and what is not to be done. ठीक है, और ये सबसे ज्यादा easiest types of plans होते हैं because इसमें इतनी ज्यादा आपको modification की जरूरत नहीं होती है. They are very rigid in nature and they have least flexibility, right? And अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, you have to pay a strict penalty for it. So rules are specific statements that tell people in an organization what is to be done and what is not to be done. They are the easiest types of plans as they are highly rigid in nature. They are meant for strict observance. There is generally a provision for fine or penalty for violation of rules. अब रूल्स के एग्जांपल्स क्या हो गए? नो पार्किंग, नो स्मोकिंग इज द रूल. मोबाइल फोन स्कूल में अलाउड नहीं है, इट इज अ रूल. यू हैव टू कम इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म इन अ स्कूल, दैट इज अ रूल, right? So if you get a question, demonstrate or give any few examples of standing plans. So that would be policies, procedures, methods, and rules, right, which are developed once, but they require time to time modification. So now we will be discussing about the programs. When we talk about programs, budgets, events, they are considered as a single use plan, right? And just remember one thing, that policies were general statements, rules were specific statements, and programs are detailed statements, right? What are programs? Programs are gamut of all the activities. Programs are the combination of different types of plans, rules, tasks, objectives, budget, policies, etc.
right? And these are detailed statements. जैसे हर एक साल जब आपका स्कूल में सेशन शुरू होता है, राइट, तो स्कूल वाले डिटेल्ड प्रोग्राम बनाते हैं, डिटेल्ड प्लान बनाते हैं, ठीक है, जहां पे वो अगर सीबीएसई ने कुछ मॉडिफिकेशंस दिए हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, राइट, अपने रूल्स में, अपनी पॉलिसीज में, अपनी गाइडलाइंस में, टास्क में, so that all things comes under program. Programs are the detailed statements about a project which outlines the objectives, policies, procedures, rules, tasks, resources to be employed, and the budget to implement any course of action. Programs decide about what will be done, how it will be done, who will do it, and when it will be done. That is, programs lays down all the activities right from the beginning till the end. A program is usually time bound. Separate programs can be prepared for different activities. Example, development of a new product, marketing, training of employees, diversification of business, issue of securities, etc. Programs are gamut of all the activities. What do you understand by the term budget? Budget basically एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है प्लान्स का, राइट? जैसे आप फैमिली बजट बनाते हो, आप माइट बी कैश बजट बनाओ, सेल्स बजट बनाओ, ठीक है, एंड बजट में हम कंपेयर करते हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ. सो बजट इज ऑल्सो यूज एज अ कंट्रोल डिवाइस, बिकॉज कंट्रोलिंग में भी हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं. किसको कंपेयर करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, राइट? अंडर बजट आल्सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द एक्चुअल खर्चे विद द एस्टिमेटेड खर्चे. सो इट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस आल्सो. Whereas when you are preparing a budget, you are planning about it, so it will come under प्लानिंग ऑल्सो. तो अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि ऐसा कौन सा तरीके का प्लान है जो प्लानिंग में भी यूज होता है, कंट्रोलिंग में भी यूज होता है, सो आंसर इज बजट, राइट? A budget is the monetary quantitative expression of business plans and policies to be pursued in the future period of time. It is basically a statement. Budget क्या है? Statement है of actual and the expected results, for a particular future period. Budgets are expressed in numerical terms, that is rupee, units, hours, etc. They serve as standards for evaluating performance. So budget is also called as a controlling device from which deviations can be taken care of. Budget fixes expected performance against which actual performance can be compared, so that timely corrective action can be taken if there is any deviation. बजट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सेटअप कर देते हैं और उस स्टैंडर्ड के साथ हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, so that we can get to know how far our actual performance deviates from the planned performance. And budget is also called as a fundamental instrument of planning. Right. Now we will be discussing case study 2, and this case study is based on the types of plans जो अभी हमने सारे discuss किए हैं. So holistic education public school is Bahadurgarh decides to implement the literacy program. Implement the literacy program of the government in the school. It is decided that within the year, the 45 support staff employees of the school made literate by the school counselors and the social workers. In order to enhance the learning process, the school decides to use audio-visual aids. Okay. To start the program, the school has to procure the literacy books from the State Resource Center at Jamia. Besides the curriculum, each literacy book contains a series of 9 tests which volunteers have to get completed by the learners during the program.
Moreover, by implementing the plan of each one, teach one, each student of the school from classes 5th to 10th will be encouraged to make one person literate. The students volunteer may select a learner by adopting any of the two ways, either from the slum areas adopted by the school or their own within vicinity of their residence. As per the norms of the Delhi government, it is mandatory for the volunteers to send back the filled copy of only the 9th test paper in the series to the authorities as a conclusive proof of the. सो इस पैराग्राफ में से जो भी हमने अभी पैराग्राफ रीड किया है, आपको कौन से टाइप्स ऑफ प्लान्स आइडेंटिफाई हुए हैं? यू कैन गिव मी द रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ. See, इसमें होलिस्टिक पब्लिक स्कूल is Bahadurgarh decides to implement the literacy program of the government in the school. Literacy program हो गया. It is decided that within the year, the 45 support staff of the school made literate by the school counselors and social workers. The school decides to use audio visual aids. Method हो गया, ठीक है? And उसके बाद to start the program, the school has to first procure the literacy books from the State Resource Center at Jamia. Besides this curriculum, each literacy book contains a series of 9 tests, which volunteers have to get completed by the learners during the program. Procedure भी हो गया, program भी हो गया, method भी हो गया, procedure भी हो गया. Moreover, by implementing the plan of each one, teach one, each student of the school from classes 5th to 10th will be encouraged to make one person literate. The students volunteer may select a learner by adopting any of the two ways जो हमने डिस्कस कर लिए थे. या तो आप स्लम एरिया से बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हो या फिर अपने जहां पे आपका रेजिडेंस है उसके पास. As per the norms of the Delhi government, it is mandatory for the volunteers to send back the filled copy of only 9th test paper in the series to the authority. That would be a rule, right? Completion of the course, else the certificate of commendation will not be awarded to them. Considering the implementation of the program to be part of its CSR, corporate social responsibility initiative, the school has to decide to spend around rupees 50,000 on the distribution of free stationery items, refreshments of the learners, etc. In the context of the above case, identify the various types of plans being discussed in the para by quoting the relevant lines. इसमें हमारे पास क्या आ जाता? Budget आ जाता. Right. So I hope you guys are cleared with the types of plans. मुझे एक thumbs up drop कर दो कि yes ma'am, we are cleared with the types of plans. अब इसमें कोई doubt नहीं है. Then I will proceed with the further topics of differentiation between the delegation and the decentralization. Viraj, see, इस बार steps of planning से question है आपके सैंपल पेपर में, एंड टाइप्स ऑफ प्लान से काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है. सो देयर आर फ्यू चांसेस कि टाइप्स ऑफ प्लान से आ जाए, केस स्टडी आ जाए. जो अभी मैंने केस स्टडी करवाई है, ऐसी केस स्टडी बोर्ड 2016 में जरूर आई थी, ठीक है? वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था तब के टाइम पे, एंड क्योंकि इस बार तो कोई 5 मार्क का क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में नहीं है. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. एंड ऑर्गेनाइजिंग में डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन बच्चों बहुत जरूरी है. सो व्हाट इज डेलीगेशन? जब मैंने काम एक्स बंदे को दिया, ठीक है, when you are delegating your work between two people, that is delegation. एंड जब आप अपने काम को लोअर मोस्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे पास ऑन कर देते हो, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? सी, एक मैनेजर चाहे जितना मर्जी केपेबल क्यों ना हो,
एबल क्यों ना हो, वो सारे के सारे काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो काम का वॉल्यूम होगा दैट विल एक्चुअली मेक इम्प्रैक्टिकल फॉर अ पर्सन टू हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ. सो उसको अपने एम्प्लॉय से हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी. And what is delegation? Delegation means downward transfer of authority from superior to a subordinate, and it is a prerequisite for the efficient functioning of an organization, right? Because जब आप काम को delegate करोगे, it will help a manager to extend his area of operations. Because अगर मैं सोचूं मैं सारे के सारे काम खुद कर लूंगी, that is impractical, that is impossible. आपको काम को डेलीगेट करना ही करना पड़ेगा, so that you get more time to focus on the other important matters of the organization, right? And when we talk about decentralization, decentralization means जब आप पावर को डिस्पोज ऑफ कर देते हो to the lower most levels of management. Delegation is a compulsory act, whereas decentralization is an optional policy. It can be done at the discretion, at the agreement of the top level management, right? So how to differentiate between delegation and decentralization? Definition and nature. Delegation, it refers to the entrustment of responsibility and authority from a superior to his subordinate, and this is individualistic. Decentralization, it refers to the systematic delegation of authority to the lower levels in the organization, and this is totalistic. Relationship, delegation establishes superior subordinate relationship. Decentralization denotes the relationship between top management and various departments and divisions. Control, the person who delegates keeps the power to control with himself. Decentralization, control is exercised in a general manner. The authority to control may be delegated to the lower levels. And as I told you, delegation एक compulsory act है, whereas जो decentralization है वो क्या है, एक optional policy है. Decentralization is not mandatory. Need, delegation is essential if an executive wants to get help from others in getting the things done. Decentralization is not compulsory. It is the top management which decides the introduction of decentralization. Purpose, पर्पस को आप ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हो. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेलीगेशन? द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेलीगेशन इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ अ मैनेजर, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन में आपका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है कि आपने सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देनी है, पावर्स देनी है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ अ मैनेजर. And decentralization may to increase the role of subordinates and giving them more autonomy, powers, etc. Decentralization के लिए keyword autonomy भी है. Process, delegation of authority is a process. Decentralization is not a process. It is the result policy decisions which are taken by the top level management. पार्टीज इन्वॉल्व, डेलीगेशन में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? 2. और डिसेंट्रलाइजेशन में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है? इट इज डिसेंट्रलाइजेशन इज जब आप पावर्स को पास ऑन कर देते हो टू द लोअर मोस्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, नाउ आई विल बी शेयरिंग, डिस्कसिंग विद यू 2 case studies. One is related to decentralization and the another one is related to delegation, so that you can actually differentiate between both these concepts. Again, I would actually like to tell you one thing, that delegation is a compulsory act. Delegation means downward transfer of authority from a superior to a subordinate, and it is very important. It is prerequisite for the efficient functioning of an organization. चाहे एक मैनेजर कितना मर्जी केपेबल क्यों ना हो, एबल क्यों ना हो, वो सारे के सारे काम नहीं खुद कर पाएगा, बिकॉज जो काम का वॉल्यूम होगा that will actually make impractical for a person to handle it all by himself. So you need to delegate the work to these subordinates. And when we talk about the decentralization, decentralization is done at the discretion of the top level management. It is an optional policy, right?
So case study 3 was there in sample paper 2023, and this question was for 6 marks. And along with the definition of the delegation and decentralization, you need to thoroughly do the importance of both the concepts. So जब भी केस स्टडी आएगी, सबसे पहले हमने उसका सब पार्ट पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. By quoting the lines given above, identify and briefly explain the benefits of the concept discussed above. Jojo and Jojo is a company known for its customers' business of baby oil and bandages. But many people do not know the company also runs a medical device and diagnostics business as well as a pharmaceutical company. With more than 180,000 employees worldwide, the company has chosen to share decision-making authority with the lower levels and place it to the nearest points of action. Therefore, the responses does not take time. So the decision making is actually very quick. This propagates the belief, this concept propagates the belief that people are competent, capable, and resourceful, who can get a chance to prove their abilities, and enables the company in identifying those executives who have the necessary potential to become the dynamic leaders, so that the checking required on the decision taken by the lower levels of management is the least. This makes it possible to evaluate the performance at each and every level, and each department can be individually held accountable for their results. So which concept of management has been highlighted in case study 3? Drop in your answers quickly. Only few people have actually answered. See, the answer to this question is decentralization, because under decentralization you are actually giving powers, autonomy to the lowermost levels of management, and you get to know how they actually perform their activities, who can be promoted to higher levels, who can actually become the dynamic leaders and take the charge of the company. So this can only happen along with the concept of decentralization. Very good, bravo. So we'll move to the next case study. So this case study was there in board 2017. Again, first of all, we need to read the sub parts of the case study, that is part A and part B. So part A, identify and briefly explain the concept which is used by Anup Gore in the above case, which had been focusing on the objectives. Also explain any 4 points of importance of the concept which is identified in part A. Anup Gore started 𝐂𝐻𝐳, a company for providing cybersecurity solutions to businesses. Its objectives is to prevent, detect, respond to cyber attacks, and protect critical data. He was a hardworking software engineer and an expert in the cybersecurity. His reputation grew by leaps and bounds, as he was not only a person of integrity, but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Science and Technology. While working on the project, he found that the volume of work made it impractical for him to handle it all the work by himself. Therefore, he decided to expand the team. The company maintained a close liaison with an engineering college in the state. During a campus placement, Arav and Pranchi were appointed to work for the new project. ओके यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हुई और हमने 2 लोगों को अपॉइंट किया नए प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है. He found the new employees capable, enthusiastic, and trustworthy. Anup Gore was thus able to focus on the objectives only with the help of Arav and Pranchi.
The project was completed on time. Not only this, Anup Gaur was able to extend his area of operations. On the other hand, Arav and Franchi also got the opportunities to develop and exercise initiative. तो कौन सा concept मैनेजमेंट का इस केस स्टडी में लग रहा है और उस कंसेप्ट के आपको 4 इंपॉर्टेंस लिखनी है? So what would be the right answer to the above question? कौन बच्चे, अगर मैं आपको डेलीगेशन की कीवर्ड्स ना बताते, कौन कौन बच्चे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट लिखते और एक्सटर्नल सोर्सेज के बेनिफिट्स लिखते? Amongst all of you, अगर हमें कीवर्ड्स डेलीगेशन के नहीं पता होते तो तुम में से कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल सोर्सेज का कॉन्सेप्ट और बेनिफिट्स लिखाते? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कैंपस प्लेसमेंट करी और हमने आरव और प्रांशी को हायर किया. मैं आपको बताती हूँ, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये आंसर उस टाइम पे गलत किया एंड दे रोट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट अलोंग विद द बेनिफिट्स. बट आई ऑलवेज टेल यू वन थिंग, you know, you need to read the carefully, very carefully, and you need to identify and look for the keywords when you're solving a business studies case problem. Isme just because we hired few people from the campus placement, right? तो देखो एक्सटर्नल सोर्सेस कंसेप्ट थोड़ा है और एक्सटर्नल सोर्सेस के तो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? सो if you have to look for the keywords for delegation, अगर लिखा है कि बहुत ज़्यादा volume of work है and it makes impractical for a person to handle it all by himself, तो आप काम को delegate करोगे, right? It helps in extending area of operations, right? And अगर आपने decentralization के लिए देखना है तो you will look out for the words like autonomy, power, placing to the nearest points of action, delegating the authority to the lowermost levels of management. So that is decentralization. So now I hope you are cleared with the two concepts of delegation and decentralization. Are you guys cleared with both these concepts or not? So now we'll be talking about the barriers to the communication, which is a very important topic for board 2023. And ये इस साल के sample paper में भी इससे 4 number का question आया हुआ है. So we have 4 types of barriers, right? We have semantic, psychological, organizational, and the personal barriers, right? So semantic barriers are also known as the linguistic barriers, and these barriers are related to the usage of wrong words, vocabulary, might be dealing with the problems and the obstructions, or when you are converting a language into some another language, might be from French to English or from Spanish to English. अगर जो translator है वो दोनों languages में proficient नहीं है तो mistakes arise हो सकती है. So semantic barriers are also called as linguistic barriers, right? It's basically the branch of linguistics dealing with the meaning of words and sentences. Semantic barriers are concerned with the problems and the obstructions in the process of encoding and decoding of message into words and impressions. See, ये जो barriers मैं आपको करवा रही हूँ, semantic, psychological, personal and organizational, ये category है. उस कैटेगरी के अंडर वी हैव फ्यू एग्जांपल्स, राइट? जैसे इसमें सिमेंटिक बैरियर्स के अंडर दिया हुआ है, दे आर एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज. तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? बैडली एक्सप्रेस मैसेज. एंड व्हाट इज बैडली एक्सप्रेस मैसेज? कि कई बार आप
एक बंदे को करेक्ट मीनिंग मैसेज का नहीं कन्वे कर पाते. Sometimes intended meaning may not be conveyed by a manager to his subordinates. These badly expressed messages may be on account of inadequate vocabulary, usage of wrong words, omission of needed words, etc. Right? And second, we have symbols with different meaning. RIGHT, WRIT, sunne mein same hai, but they have different meanings, right? A word may have several meanings. Receiver has to perceive one such meaning for the word used by the communicator. Next, we have faulty translations. Sometimes the communication originally drafted in one language, example English, need to be translated to the language understandable to the workers, example Hindi. If the translator is not proficient with both the languages, mistakes may creep in, causing different meanings to the communication. So under semantic barriers, we have discussed 3 points, that is badly expressed message, symbols with different meanings, faulty translations. And next we have unclarified assumptions. Unclarified assumptions का मैं आपको एक example देती हूँ. For example, I told my employee X or Y to take care of the foreign guest, right? I told my subordinate to take care of the foreign guest. I meant कि उनके रहने का, उनके खाने का देखभाल रखना. अगर मेरे कोई foreign guest आए हैं, and I told my subordinate to take care of them. So might be मेरा जो employee है उसने ये perceive किया अपने दिमाग में कि जो भी foreign guest आए हैं, they should be taken with due care. ठीक है, बड़े आराम से उनको अच्छे से लेके जाना है, from office to the hotel room. तो ये unclarified assumption का example है, right? Some communications may have certain assumptions which are subject to different interpretations. Next, we have technical jargon. It is usually found that specialists use technical jargon while explaining to persons who are not specialists in the concerned field. Therefore, they may not understand the actual meaning of many such words. Next, we have body language and gesture decoding. कई बार हम बोल कुछ और रहे होते हैं और हमारे gestures कुछ और show कर रहे होते हैं, right? So they also act as a barrier in the effective communication process, right? Because अगर कोई match नहीं है between what is being said and आपके gestures, so that also acts as a hindrance in the effective communication process. So we have 6 examples of semantic barriers. Under the category of semantic barriers, we have 6 points. That is badly expressed message, symbols with different meanings, faulty translations, unclarified assumptions, technical jargon, and body language and gesture decoding. So this case study 5 is from sample paper 2023, and it states that state any 4 barriers to communication which are concerned with the problems and obstructions in the process of encoding and decoding the message into words or impressions. So इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर would be simply semantic barriers. और अब semantic barriers के कैटेगरीज को क्या कर दोगे? एक्सप्लेन कर दोगे. कैटेगरीज जो अभी हमने पढ़ी, badly expressed message, symbols with different meanings, unclarified assumptions, faulty translations, body language gesture decoding, technical jargon, etc. Now I will be talking about the psychological or the emotional barriers. And psychological or the emotional barriers are those barriers which are related to the mind of both the sender and the receiver, right? Psychological barriers का दूसरा नाम क्या है? Emotional barriers, and these are those barriers which are related to the mindset of both the sender and the receiver. It says that emotional or psychological factors act as a barriers to communicators. For example, a worried person cannot communicate properly, and an angry receiver cannot understand the real meaning of message. The state of mind of both the sender and the receiver of communication reflects in the effective communication. And psychological barriers के जो examples हैं, they are discussed below. सबसे पहला क्या है? Premature evaluation. Premature evaluation के message complete भी नहीं हुआ, आपने पहले से ही क्या करना?
कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब भी मैं अपनी पीपीटी देने जाती हूँ तो मेरा बॉस मेरी पीपीटी में कमियां निकालता ही निकालता है। तो दिस टाइम ऑल्सो एट 1 o'clock आई हैड माई प्रेजेंटेशन ना, और मेरी जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुई मैं उस केबिन से निकल के चली गई। ठीक है, मुझे लगा मेरे बॉस ने फिर से कमियां निकालनी हुई होगी, एंड दिस टाइम ही थॉट कि नहीं, आई शुड एक्चुअली अप्रिशिएट इशिका फॉर हर वर्क एक्चुअली। सो दिस वाज माय इंटरप्रिटेशन कि बॉस मेरे अंदर उस चीज से रिगार्डिंग कमियां निकालना चाहता है। सो दैट इज प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। मैसेज कंप्लीट भी नहीं हुआ, आपने पहले ही इवैल्यूएट कर दिया। Sometimes people evaluate the meaning of the message before the sender completes his message. Such premature evaluation may be due to preconceived notions or prejudices against the communication. Second, we have lack of attention or poor listening. And lack of attention or poor listening का क्या मतलब होता है कि for example कि कई बार एक बंदे का दिमाग किसी और चीज में preoccupied है, तो वो आपको अच्छे से ढंग से रिप्लाई नहीं दे पा रहा है। दैट इज लैक ऑफ अटेंशन और पुअर लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ऑफिस का कुछ काम कर रही हूँ एंड आई हैव अ लोड ऑफ फाइल्स मेरे पास, ठीक है, तो मेरा एक एम्प्लॉय आता है कि मैम आई नीड लीव फॉर गुड 5 to 6 days, आई हैव टू गो टू माय सिटी एंड हेल्प माय फैमिली इन XYZ वर्क, एंड उसने मेरे को पहले भी बोला होता है उस चीज के लिए, सिंस बिकॉज माय माइंड वाज प्री ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ फाइल्स, तो मैंने उसकी लीव को सैंक्शन नहीं किया। सो दैट इज लैक ऑफ अटेंशन और पुअर लिसनिंग। तीसरा, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन स्टेट्स दैट कि जब इंफॉर्मेशन वेरियस लेवल्स के थ्रू पास होती है, सो देयर कैन बी loss of information, right? There could be supply of incorrect information, inaccurate information, and poor retention states that usually you are not able to retain so much of content in your mind when you are not interested in that particular topic. अब जैसे अगर मैं किसी particular topic को सुनने के लिए interested नहीं हूँ, तो मैं उस information को अपने दिमाग में बहुत ज्यादा time के लिए retain नहीं करूंगी, right? And next we have distrust. Distrust between the communicator and the communicatee acts as a barrier. If the parties do not believe each other, they cannot understand each other's message in its original sense. So we have 4 things under the personal barriers: premature evaluation, lack of attention, loss by transmission, and poor retention. And then we have distrust. Okay, next we'll be talking about the organizational barriers, and organizational barriers are those barriers which are related to organization, जैसे rules, regulations, authority, responsibility, relationships, etc. The factors related to the organization structure, authority, relationships, rules, and regulations may sometimes act as barriers to the effective communication process. Some of these are: first, organizational policy. If the organizational policy, explicit or implicit, is not supportive to the free flow of communication, it may hamper effectiveness of the communication. For example, in an organization with highly centralized pattern, people may not be encouraged to have free communication. कई बार क्या होता है, जहाँ पे organizations are following a centralized pattern कि यार boss के through ही सारी information circulate होगी, so that also acts as a hindrance, that also acts as a barrier in the effective communication process. Second आता है rules and regulations. Rigid rules, regulations also acts as a hindrance in the communication process, जिससे आपकी communication क्या हो जाती है, delay हो जाती है. Rigid rules and cumbersome procedures may be a hurdle to communication. Similarly, communications through prescribed channel may result in delays. If we are following, a proper channel of communication or scholar chain, that also acts as a delay or acts as a hindrance in the effective communication process. Third, we have status.
राइट. इफ आई एम वर्किंग एट अ हायर स्टेटस और अ हायर लेवल, तो मुझे ये होगा कि मैं लोअर लेवल से क्यों बातचीत करूं, कम लोगों से क्यों बातचीत करूं, राइट. एंड फोर्थ, कंप्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अगर मेरा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत ज्यादा मिनीजरियल लेवल्स हैं, तो मेरी कम्युनिकेशन डिले होगी ही होगी, मेरी कम्युनिकेशन हैम्पर होगी ही होगी, बिकॉज माई फिल्ट्रेशन पॉइंट्स आर मोर. So if you get a question, what are the few examples of the organizational barriers? It could be organizational policy, it could be organizational structure, बहुत ज़्यादा complex है, it could be rules and regulations, status, etc. Right. It states that if the organization doesn't provide with facilities like, frequent group meetings or complaint boxes or suggestion boxes, so that also acts as a barrier in the effective communication process. So what are the organizational barriers? It is complexity in organizational structure, organization की क्या policy है, rules and regulations, status, and organizational policy. So this case study 6 is also from sample paper 2023. It states that state any 4 barriers to communication which are related to authority relationship, rules and regulations of the company. So you will write the heading organizational barriers, और organizational barriers में जितने भी ये 4 or 5 points हैं, आप उनको क्या कर दोगे, explain कर दोगे. Next, we have personal barriers. Personal barriers are also called as individual barriers. The personal factors of both the sender and the receiver also acts as a barrier in the effective communication process. जैसे इसमें सबसे पहला point क्या है? Fear of challenge to authority. If a superior perceives that a particular communication may adversely affect his authority, he or she may withhold that communication. अगर मेरे को लगता है मैं superior हूँ, मैं boss हूँ, अगर मैं ये communication करूंगी, इससे मेरी authority levels पे फर्क पड़ सकता है, तो मैं उस communication को suppress करके रख सकती हूँ. Second, lack of confidence of superior on his subordinates. For example, if I'm running a school, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो ऑलरेडी जो टीचर्स काम कर रहे हैं फॉर द म्यूजिक एंड द डांस, तो मैं उनसे काम नहीं करवा रही हूँ फॉर दिस एनुअल फंक्शन, बिकॉज मेरे को लगता है यार, मैं थोड़ा सा ना, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है उनकी एबिलिटी पे कि वो अच्छे से इतने बड़े फंक्शन को कैरी आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर से टीचर्स को हायर किया और उनको ये काम आउटसोर्स किया. सो दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स. And तीसरा is unwillingness to communicate. Unwillingness to communicate. For example, if I am a subordinate और मुझे पता है जब भी मैं बॉस के पास जाऊंगी किसी XYZ चीजों के लिए, वो मेरे को डांटेगा कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आ रहे हो, ठीक है. So I will not go to him or her for any doubt or any query. Sometimes subordinates may not be prepared to communicate with these superiors if they perceive that it may adversely affect their interest, right? And last, we have lack of proper incentives. अगर आपको एक subordinate suggestions दिए जा रहा है and उसके लिए कोई reward नहीं है, कोई appreciation नहीं है, so there would be a point of time कि जब वो बोलेगा भाई साहब अब तो मैं आपको suggestion देना क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ. So personal barriers are based on the personal factors, personal conditions between the sender and the receiver, right? And these are also called as the individual barriers. And under personal barriers, हमारे पास 4 points हैं. That is fear of challenge to authority, lack of confidence of superior on their subordinate, unwillingness to communicate, and lack of proper incentives, right? I hope you guys are cleared with the 4 types of barriers, that is semantic, psychological, organizational, and personal. And then we'll be moving to financial management का practical वाला part. Are you guys cleared with the barriers to communication or not? Drop me a thumbs up. Great, bravo. I'll just share the another PDF for this chapter number 9, financial management ka practical, and then we'll study that in detail.
Now we will be discussing a very, very important topic from chapter 9, and that is all about the capital structure. And capital structure, say, you can get a numerical question for good 4 marks. So, what do you understand by the term capital structure? So, capital structure is a, it's a mixture, it's a blend of the owner fund and the borrowed fund. And when we talk about the owner fund, we mainly talk about the equity shares, preference shares, retained earnings. And when we talk about the borrowed funds, we talk about the debentures and the loans which we take from the financial institutions and the general public. And see, I'll just tell you one thing. When we talk about the financing decisions, also financing decisions tells us about the quantum of finance, quantum amount of finance that has to be raised from the various, long-term sources. Financing decisions also tells us कि हमने कितना पैसा owner fund से raise करना है, कितना पैसा borrower fund से raise करना है, right? And जो financing decisions होते हैं, they affect the overall cost of capital and financial risk of a business enterprise. So capital structure कहीं ना कहीं similar concept है. So it says that one of the very important decisions under the financial management relates to the financing pattern or the proportion of the use of different sources in raising funds. On the basis of ownership, the sources of business finance can be broadly classified into the two categories, that is the owner funds and the borrowed funds. Owner's fund consists of the equity share capital, preference share capital, reserves and surplus for the retained earnings. And borrowed funds can be in the form of loans, debentures, public deposits, etc. These may be borrowed from banks, other financial institutions, debenture holders, and general public. And you know that capital structure is computed as debt over equity or debt over debt plus equity. It refers to the mix between the owners and the borrowed funds. It can be calculated as debt equity ratio, that is debt over equity. And एक चीज याद रखना, जो debt है और equity है वो differ करता है in terms of their cost and riskiness. See, when we talk about debt cheaper है but क्या है, risky है. Debt is cheaper but debt is risky, right? Debt risky क्यों है कंपनी के लिए? Because debt पे आपको interest भी pay करना पड़ेगा, debt पे आपको principal amount भी pay करनी पड़ेगी, irrespective आपके पास पैसा है भी के नहीं है. But when we talk about equity, from the company's point of view, equity is riskless. Equity riskless है because equity के towards हमारी कोई commitment नहीं है कि हमने हर एक साल कुछ amount of dividend देना ही देना है. जब company liquidate हो रही है तो हमें पैसा return करना ही करना है, right? But equity is expensive as and when compared to debt, right? It says that debt is cheaper but more risky for a business because the payment of interest and the return of the principal is obligatory for the business. Any default in meeting these commitments may force the business to go into liquidation. There is no such compulsion in case of equity, which is therefore considered to be the riskless for the business. Higher use of debt increases the fixed financial charges of a business. As a result, increased use of debt increases the financial risk of a company. And what is a financial risk? Financial risk एक ऐसी situation है जहां पे कंपनी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाती है, जैसे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना, डिबेंचर्स की प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न करना. Financial risk is the chance that a firm would fail to meet its payment obligations, right? Capital structure of a company thus affects both the profitability and the financial risk of a business enterprise. जो financing decision था, it used to affect the overall cost of capital and financial risk of a business enterprise. But जो capital structure है, that affects both the profitability and the financial risk of a business enterprise.
एंड ये कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल तब कहलाया जाएगा जब डेट और इक्विटी का मिक्सचर ऐसे होगा जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, यू कैन गेट अ क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल कब कहलाया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल तब कहलाया जाता है जब डेट और इक्विटी का जो प्रपोर्शन है वो ऐसा है जिससे इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू वेल्थ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। In other words, all the decisions which are relating to capital structure should emphasize on increasing the shareholders wealth. And if you get a question कि capital structure किसको affect करता है, it affects the profitability and the financial risk of a business enterprise, right? Okay, then we will be talking about the topic which is called as financial leverage, right? जो डेट का प्रमोशन है, अमाउंट ऑफ डेट है टोटल कैपिटल में, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लीवरेज। एंड फाइनेंशियल लीवरेज आपकी फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज ऑल्सो नोन एज capital gearing, right? The proportion of debt in the overall capital is called as financial leverage, and financial leverage is computed as debt over equity. So अब ये जो कंपनी एक्स की सिचुएशन है इसको बहुत अच्छे से सुनो, समझो। आपको बिजनेस में टोटल फंड्स कितने चाहिए? 30 lakhs। आपको बिजनेस में टोटल पैसा कितना चाहिए? 30 lakhs, राइट? इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ ये इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ये जो इंटरेस्ट है ये किस पे कैलकुलेट होगा? ये इंटरेस्ट हम क्यों यूज करते हैं बताइए। ओके, स्टूडेंट्स आर सेइंग ये जो इंटरेस्ट है ये किस पे लगेगा राजी? लोन्स पे, बोरोइंग्स पे, डेट पे। आपको बिजनेस में टोटल पैसा कितना चाहिए? 30 लाख। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% पर एनम। आपको क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 30%। EBIT is 4 lakhs. And what is EBIT? That is, earning before interest and taxes. अब हमारे पास डेट की कितनी सिचुएशंस हैं? 3 सिचुएशंस हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। सिचुएशन 1 में मेरा डेट 0 है, 0। तो मैंने 30 का 30 lakhs किससे उठाया? इक्विटी से। और इसके आगे शब्द क्या यूज करोगे आप? रुपीस। सिचुएशन 2 में अगर डेट 10 लाख है तो मैंने इक्विटी से कितना पैसा उठाया होगा? 20 लाख। सिचुएशन 3 में अगर डेट 20 लाख है तो मैंने इक्विटी से कितना पैसा उठाया होगा? रुपीस 10 लाख, राइट? अब तीनों सिचुएशंस में मेरा EBIT हमारे पास कितना है? दैट इज 4 lakhs, 4 lakhs, 4 lakhs। EBIT में आप सबसे पहले क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमारा किस पे लगेगा? डेट पे, लोन पे, बोरोइंग में। सिचुएशन 1 में आपका डेट 0 है तो 0 का 10% इज 0। 10 लाख का 10% इज 1 लाख एंड 20 लाख का 10% इज 2 लाख। EBIT में से आपने क्या माइनस किया? इंटरेस्ट। तो आपके पास क्या आया? EBT दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्सेस। 4 लाख में से 0 गया, हमारे पास कितना आया? 4 lakhs। 4 लाख में से 1 लाख गया, हमारे पास कितना आया? 3 lakhs। एंड 4 lakhs में से 2 lakhs गया, हमारे पास कितना आया? 2 lakhs। अब EBT अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप क्या माइनस करोगे? टैक्स। और टैक्स आपको क्वेश्चन में कितना गिवन था? 30%, राइट? सो
4 लाख का 30% इज 1,20,000, 3 लाख का 30% इज 90,000 and 2 lakh का 30% is 60,000. अर्निंग बिफोर टैक्सेस में से आपने क्या माइनस कर दिया टैक्स, आपके पास क्या आएगा EAT, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स. सो 4 लाख में से 1,20,000 गया, ये कितना आया 2,80,000. 3 lakhs में से 90,000 गया, कितना आया 2,10,000. एंड 2 लाख में से 60,000 गया, कितना आया 1,40,000. Then the column is for the number of shares. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, the question is silent, तो आप number of shares का जो प्राइस है वो कितना लोगे, ₹10. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम शेयर का प्राइस कितना लेंगे, 10 रुपए. अगर मेंशन्ड है 100 रुपए, 50 रुपए, देन द सिचुएशन इज डिफरेंट. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन्ड है तो आप शेयर का प्राइस कितना लोगे, 10. तो नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम कैसे निकला, सिचुएशन 1 में डेट 0 था, तो 30 का 30 लाख रुपीस, 30 का 30 लाख आपने किससे उठाया, इक्विटी से. तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 3 लाख. सिचुएशन 2 में अगर मैंने डेट से 10 लाख उठाया है तो मैंने 20 लाख किससे उठाया होगा, इक्विटी से. तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने आ गए, 2 लाख आ गए. एंड सिचुएशन 3 में हमने डेट से कितना पैसा उठाया, ₹20 लाख. तो ऑफ कोर्स हमने 10 लाख किससे उठाया होगा, इक्विटी से. तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 1 लाख. अब EPS, व्हाट इज EPS, अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर, एंड अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है, that is earning after tax divided by number of shares. earning per share कैसे कैलकुलेट होता है, that is earning after tax divided by number of shares. so 2,80,000 upon 3 lakh आपके पास कितना आया, 0.93. 2,10,000 divided by 2 lakh आपके पास कितना आया, 1.05. एंड 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख आपके पास कितना आया, 1.40. तो आपने जैसे जैसे डेट की यूसेज बढ़ाई, आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ा. अब द क्वेश्चन इज क्यों बढ़ा, आई विल जस्ट टेल यू. 3 situations are considered. There is no debt. सिचुएशन 1 में कोई डेट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म. अनलीवर्ड फर्म. डेट ऑफ ₹10 lakh and 20 lakhs are assumed in situation 2 and 3 respectively. All debt is at 10% per annum. The company earns ₹0.93 per share if it is unlevered. अगर हमारी फर्म अनलीवर्ड है, 0 डेट है, तो सिचुएशन 1 में कंपनी ने EPS कितना अर्न किया, दैट इज 0.93, राइट. विद डेट ऑफ ₹10 लाख, जब आपका डेट कितना हुआ, 10 लाख हुआ, तो आपने अर्निंग पर शेयर कितना अर्न किया, 1.05. with the still higher debt of 20 lakhs, its EPS rises to 1.40. तो जैसे जैसे आपने डेट की यूसेज बढ़ाई, आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. एंड द क्वेश्चन इज क्यों मेरा EPS बढ़ रहा है विद द इंक्रीज यूज ऑफ डेट. सो हियर इज द आंसर. इट सेज दैट why is the EPS rising with the higher debt? It is because the cost of debt, what is the cost of debt? Interest. Interest is lower than the return that the company is earning on the funds employed. अब इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ROI, that is return on investment. और return on investment कैसे कैलकुलेट की जाती है, that is EBIT upon total investment into
100. The company is earning a return on investment of 13.33%, that is EBIT upon total investment into 100. 4 lakhs upon 30 lakhs into 100. ठीक है, which comes out to be 13.33%. अब मेरा ROI 13.33% है और जो मैं डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रही हूँ दैट इज 10%. तो जो मेरा ROI है वो मेरे इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, इसीलिए मेरा जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे मैं डेट का यूसेज बढ़ा रही हूँ. With higher use of debt, this difference between ROI and cost of debt increases the earning per share. And जब आपका ROI आपके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल फाइनेंशियल leverage, right? This is a situation of favorable financial leverage. In such cases, companies often employ more of cheaper debt to enhance the earning per share of the company. And such practice is called as trading on equity. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहां पे हम शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स को तो बढ़ाते बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ कंपनी अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को जरूर पूरा करती है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी refers to increase in profit which is earned by the equity shareholders and when you are meeting the fixed financial charges also along with that. अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाली प्रैक्टिस आप कब अडॉप्ट कर सकते हो? आप तब अडॉप्ट कर सकते हो जब आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो क्या है? फेवरेबल है. एक होती है अनलीवर्ड फॉर्म जहां पे कोई डेट नहीं है, एंड लीवर्ड फॉर्म व्हेन यू हैव द amount of debt. So financial leverage जो है that can be favorable, that can be unfavorable. Favorable तब होगी जब जो ROI है वो आपके इंटरेस्ट रेट से क्या है? ज्यादा है, which is called as a situation of favorable financial leverage, right? I'll take 2 minutes more. अब ना मैं आपको कंपनी वाई सिचुएशन करवा रही हूँ. कंपनी वाई सिचुएशन में बेटा सब कुछ सेम है, सब कुछ. आपको टोटल फंड्स भी 30 लाख चाहिए, आपको इंटरेस्ट भी आपका 10% पर एनम है, टैक्स रेट भी 30% है, बट यहाँ पे हमारा जो EBIT है वो कितना है? 2 लाख है. इन कंपनी एक्स की सिचुएशन में द EBIT वाज 4 लाख. डेट पहली सिचुएशन में आपने 0 लिया तो ₹30 लाख आपने किससे उठाया? इक्विटी से. सिचुएशन 2 में आपने डेट कितना लिया? 10 लाख. सो इक्विटी से कितना पैसा उठाया? ₹20 लाख. सिचुएशन 3 में आपने डेट कितना लिया? 20 लाख. तो आपने इक्विटी से कितना उठाया होगा? 10 लाख, राइट? तो आई हैव 3 सिचुएशंस और तीनों सिचुएशंस में मेरा EBIT इज 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख. उसमें से मैं सबसे पहले क्या माइनस करूंगी? इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा? डेट पे लगेगा बेटा. तो सिचुएशन 1 में डेट 0 है, नील है, तो नील का 10% इज नील. सिचुएशन 2 में डेट 10 लाख है, तो 10 लाख का 10% वुड बी 1 लाख. सिचुएशन 3 में आपका जो डेट है दैट इज 20 लाख, तो 20 लाख का 10% वुड बी 2 लाख. सो EBIT में से इंटरेस्ट गया, आपके पास क्या आया? EBT दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्सेस. 2 लाख में से 0 गया 2 लाख, 2 लाख में से 1 लाख गया 1 लाख, एंड 2 लाख में से 2 लाख गया 0. इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? टैक्स. टैक्स कितना था? 30%. अब 2 लाख का 30% कितना हुआ हमारे पास? 60,000. 1 लाख का 30% कितना हुआ? 30,000. एंड नील का 30% कितना हुआ? नील हुआ. इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? EAT, एंड दिस EAT इज कॉल्ड एज अर्निंग आफ्टर टैक्स. तो 2 लाख में से 60,000 गया, कितना आया? 1,40,000. 1 लाख में से 30,000 गया, कितना आया? 70,000. एंड नील में से नील गया
नील। नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है कैसे निकालने हैं? सिचुएशन 1 में डेट 0 था, तो ₹30 lakhs आपने किससे उठाया? इक्विटी से। अब जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम शेयर का प्राइस कितना लेंगे? 10 लेंगे। तो 30 lakhs डिवाइडेड बाय 10, फर्स्ट कॉलम के लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 3 lakhs। सिचुएशन 2 में हमारा जो डेट था वो 10 lakhs था, तो इक्विटी वुड ऑफ कोर्स वुड बी ₹20 lakhs। तो 20 lakhs का जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा? 2 lakhs। एंड सिचुएशन 3 में हमारा जो डेट था वो कितना था? 20 lakhs था, तो इक्विटी कितना हुआ? 10 lakhs। तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 1 lakh। अब हमने क्या निकालना है? ईपीएस। ईपीएस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 1,40,000 अपॉन 3 लाख कितना आया? 0.47। 70,000 अपॉन 2 लाख कितना आया? 0.35। एंड नील अपॉन 1 लाख कितना आया? नील। अब यहाँ पे आपने जैसे जैसे डेट बढ़ाया, यहाँ पे आपने जैसे जैसे डेट बढ़ाया, तो आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। कंपनी वाई की सिचुएशन में हम जैसे जैसे डेट को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो कम हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, अब वो डिस्कस करते हैं। In this example, the EPS of the company is falling with increased use of debt. It is because the company's rate of return on investment is less than the cost of debt. What is cost of debt? जो आप डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो। इस सिचुएशन में जो ROI है वो कम है और जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? ज्यादा है, राइट? सो ROI आपको पता है कैसे निकलता है? दैट इज EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सो 2 lakhs अपॉन 30 lakhs इनटू 100, वो कितना आया? 6.67। और आप इंटरेस्ट रेट कितना पे कर रहे हो? 10%। तो जो मेरा रिटर्न है वो कम है और जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा है। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। दैट मींस जो डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं है। और इस सिचुएशन में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज क्लियरली अनएडवाइजेबल। जब आपकी मतलब जब आपकी फाइनेंशियल लीवरेज अनफेवरेबल है तो उस सिचुएशन में हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एडवाइस नहीं करते हैं कंपनीज को। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज ओनली एडवाइजेबल व्हेन द फाइनेंशियल लीवरेज इज favorable, that is when your ROI is greater than the cost of debt, that is the interest rate. Ideally, a company must choose that risk return combination which maximizes the shareholders वेल्थ। हमें हमेशा वो कॉम्बिनेशन डेट और इक्विटी का ऑप्ट करना चाहिए जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े, राइट? एंड जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, राइट, एंड कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को इफेक्ट करता है। सो आई hope I was able to help you guys out in today's session, right? And I wish you guys all the very best for your business studies exam. And if you have any doubts, you can ask me anytime, right? So thank you so much.